हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह सुबह जब मैं उठा, आई फाउंड आउट कि एग्स ख़त्म हो चुके हैं। सो आई क्विकली वेंट आउट टू द शॉपिंग सेंटर टू बाय सम एग्स फॉर आवर मील नंबर 1। सो गाइस, ये है मेरी मील नंबर 1। इसमें मैंने लिया है 5 होल एग्स का एक ऑमलेट और 250 ग्राम स्प्राउट्स और कुछ मखाने एंड दिस इज़ अ ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, घर का बना हुआ। एंड दीज आर सम मंचीज़ जो मैं साइड में खाता हूँ विद द ऑमलेट, बिकॉज ऑमलेट में आई डू नॉट जनरली पुट इन एनीथिंग, सो जस्ट टू मेक इट टेस्ट बेटर आई ईट दीज अलॉन्ग दिस। कोई कंप्लेंट, कोई फैंसी लाइटिंग नहीं, बस विंडो से एक लाइट आ रही है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग लाइक इन द मॉर्निंग। Before moving ahead in the video, I would like to tell you guys that इस वीडियो को देखकर you guys might think that this is a lot to eat in a day, but believe me, I thought so too. Actually, we ectomorphs have a very little appetite, which can be improved by force feeding ourselves little by little, day by day. At least that is what I did. So guys, my breakfast is incomplete without this cold coffee. So I'll catch you guys after I finish this. So guys, घर पे ब्राउन ब्रेड ख़त्म हो गई है और हमें अपनी मील नंबर 2 के लिए ब्राउन ब्रेड चाहिए होगी, तो मैं जल्दी से ब्राउन ब्रेड लेके आता हूँ। So guys, this is our meal number 2. These are आलू सैंडविचेस एंड ये मैं अपने लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कंज्यूम करता हूँ जस्ट सो दैट मेरा कैलोरी इनटेक बढ़ जाए। सो गाइस, ये है मेरी प्री वर्कआउट मील और इसमें मैंने लिया है थोड़े से चावल और घर पे बनी हुई सब्ज़ी। आज कड़ी बनी है तो हम कड़ी लेंगे एंड इसको खा के आई विल टेक अ नैप और उसके बाद अराउंड 5:30 हम जाएंगे जिम और दिस इज़ गोना बी माई प्री वर्कआउट मील। अब मैं इसको खाने के बाद सोऊंगा इसलिए क्योंकि मेरे जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे सो दैट आई कैन परफॉर्म गुड इन द जिम। तो मिलते हैं इसको फिनिश करने के बाद। I would like to tell you guys one more thing, that if after watching this video any of you decides to follow the diet that I've shown, then in the beginning it might be a case that some of you might face indigestion issues. Reason being, हमारी बॉडी को एकदम से इतना सारा खाना खाने की आदत नहीं होती, but eventually things should go well, resulting in a good bulk and the desired results.
yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college So I just got back home from the gym and this is the first thing that I consume after the protein shake at the gym. So ये एक बनाना शेक है और इसमें अराउंड 2 बनानास, एक या आधा कप मिल्क और 50 ग्राम ओट्स हैं. ना द रीज़न बिहाइंड कि मैं इसको कंज्यूम करता हूँ एज सून एज़ पॉसिबल इज़ बिकॉज जिम में एक इंटेंस वर्कआउट के बाद हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली हो जाते हैं एंड आवर बॉडी नीड्स एनर्जी. सो जो हमने प्रोटीन कंज्यूम करा है, वी डोंट वांट कि वो प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए यूज़ हो. वी वांट कि वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जो मसल डैमेज, जो माइक्रो टीयर्स आए हैं उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ हो. सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बॉडी विद द रिक्वायर्ड एनर्जी टू फुलफिल द ग्लाइकोजन स्टोर्स, आई कंज्यूम दिस. आफ्टर दिस शेक आई एम गोना ईट माई 5 एग वाइट्स. वो मैं आपको इसको ख़त्म करने के बाद दिखाता हूँ. तो गाइस ये है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील. इसमें आई हैव इंक्लूडेड 5 एग वाइट्स एंड आफ्टर दिस आई विल बी ईटिंग वाइट सॉस पास्ता टू ऐड इन सब कार्ब्स. और ये सब हम एंजॉय करेंगे वाइल वॉचिंग साकेत's व्लॉग. सो सी यू आफ्टर आई फिनिश दिस. सो गाइस ये है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील का एक पार्ट. ये है होल व्हीट पास्ता और क्वांटिटी आप देख सकते हो. और इसके साथ मैं और जो भी खाता हूँ, जो भी प्रोटीन सोर्स होता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में. सो मेरी जो पोस्ट वर्कआउट मील होती है वो दिन की सबसे बड़ी मील होती है. सो दिस रियली हेल्प्स मी हिट द प्रोटीन गोल फॉर द डे एंड आई हैव टेकन अराउंड 200 to 250 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड चिकन. अब इसको इंक्लूड करना डिपेंड्स ऑन योर बजट. अगर आपका बजट इतना नहीं है देन यू कैन गो फॉर सोया चंक्स और स्प्राउट्स एज वेल. अब मैं इसको खाऊंगा एंड आफ्टर दैट आई विल रेस्ट अप. फिर मिलते हैं दिन की लास्ट मील के लिए. घर में डिनर में जो भी बना होता है आई कंज्यूम इट फॉर द लास्ट मील ऑफ माई डे. एंड आज कोइंसिडेंटली चिकन बना है. जनरली आई डू नॉट कंज्यूम दिस मच अमाउंट ऑफ चिकन इन माई डाइट, बट सिंस आज ये बना है तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. एंड अभी अराउंड 11 बज रहे हैं एंड मोस्टली मैं इसी टाइम अपना डिनर करता हूँ. आफ्टर दिस आई स्टे अप
for like a couple of more hours and then I go to sleep. But yeah, जनरली मैं रोटी प्रेफर नहीं करता. I prefer कि मैं डिनर में भी राइस खाऊं.